बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल लर्नर पॉइंट। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम असाइनमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसका सब्जेक्ट कोड 8553 है और ये है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड और AIU से एग्जाम से रिलेटेड है और उसका जो सेमेस्टर है वो ऑटम 2022 है। तो लेवल एम कॉम है, BS या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। तो चले एक्सप्रेशन की तरफ जाते हैं हम। तो ये हमारा क्वेश्चन है, टाइटल कंपनी एंगेज इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अक्टूबर 2022। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। अक्टूबर 7 सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू लियाना ऑर्टिज, टर्म 9 and 30 FOB फ्लाइट ऑन बोर्ड शिपिंग पॉइंट ₹6,000 कॉस्ट ₹306,000। दिस ट्रांजैक्शंस की एक्सप्लेनेशन ये है कि जो हमारी टाइटल कंपनी है उसने लियाना ऑर्टिज को यानी ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट उधार पे उसको अपनी चीज़ें बेची हैं, जिसके टर्म्स हैं N30। अगर वो 30 डेज में पेमेंट करेगा तो उसको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा सच उन्होंने मेंशन नहीं किया, वैसे ऐसे ही होता है। उसकी जो FOB है, तो FOB मीन्स ये एक्सपोर्ट कर रहा है, किसी और जगह से चीज़ को बेच रहा है, तो वहाँ FOB के तहत अपनी पोर्ट पे उसको ड्रॉप कर देगा। तो उसके बाद जो उसके सेल्स अमाउंट है वो ₹6,000 है। तो उसके बाद हम इसकी दूसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रफ कंपनी टर्म्स N30 FOB शिपिंग पॉइंट ₹12,000। अब पहले क्या किया है कि पहले मर्चेंडाइज को सेल किया है, अब उसने उसी सेम लाइन पे रफ कंपनी से ऑन क्रेडिट जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है उसको परचेज किया है। जो पेमेंट टर्म्स हैं वो सेम है as as mentioned in October 7 in case of sales। तो ये भी FOB पॉइंट है, तो इसकी जो वैल्यू है परचेज की वो 12,000 है। अब अक्टूबर 9 को है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू पीटर वाट्स, टर्म N30 FOB shipping point ₹4,800। One thing you have been noticed here that whenever he is talking about the sales of the merchandise, he gives cost of the goods in parentheses. This is not happening in the case of purchase. So, because on sale he is earning some profit plus some cost. That's why he is mentioning the cost of the merchandise in parentheses. Where you found the terminology or phrase sold or sell, there should be information given in parentheses regarding cost. So move on to the October 10. What happened again? See, purchase merchandise on credit from Sewall Company. Terms are same and 30 FOB shipping point ₹19,200 including ₹1,200. Okay, this point is to be noted. ₹9,200 including ₹1,200 flight cost paid by Sewall। तो इसमें जो ₹19,200 है, इसमें उसने वो कास्ट भी शामिल कर दी है 1200 की, जो कि स्वेल ने पेड की है, लेकिन ये हमारी कास्ट में शामिल है। उसने उस वक्त तो पे कर दी, लेकिन बाद में हमें हमारी इसमें शामिल कर दी जो गुड्स हमने परचेज किया परचेज इन्वेंट्री में। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है जी, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू पीटर वाट्स। अगेन सेम पीटर वाट्स आ गया, सेम अमाउंट हमने बेची है, उसकी जो कास्ट है सेम है। 14 रिटर्न डैमेज मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम रफ कंपनी। रफ कंपनी को जो हमने चीज़ें परचेज की थी ये 8 अक्टूबर को, उसमें से हमने कितनी मर्चेंडाइज रिटर्न की हैं? 1200 की। रफ कंपनी को रिसीव चेक फ्रॉम लीना या लियाना ऑर्टिज फॉर हर परचेज ऑफ October 7। doesn't confuse here with the word purchase. He is writing a purchase in context of Lina Ortiz. Lina Ortiz has purchased goods from Tattle Company. So this purchase is belongs to the Lina Company. तो उसने पेमेंट कर दी जो उसने 7 अक्टूबर को परचेज की थी या हमने सेल की थी। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश अगेंस्ट, सी अगेन in within parentheses the cost of the goods sold is given,
because we have to be adjust cost of merchandising inventory with the cost of goods sold. पेड सेवल कंपनी फॉर परचेजेस ऑफ अक्टूबर 10 हमने सेवल को भी पेड कर दी। सेवल को हमने जो किया था वो 19,200 थी। हमारे भाव पे इस ट्रांजेक्शन से लगता है उसने 1,200 पेड कर दिए थे, लेकिन वो हमारी कार से रिलेटेड थे, इसलिए उसने इसको इसमें इंक्लूड कर दिया इनवॉइस बिल में। पेड ऑफ कंपनी ये अभी मैंने आपको बता दी है। हाँ, हमने उसको 1200 की रिटर्न भी की रफ कंपनी को। लास्ट ट्रांजेक्शन 24th of October accepted from पीटर वाट्स अ रिटर्न ऑफ मर्चेंडाइज। जब हमने सोल्ड की थी उसको पीटर वाट्स को, ये हमारे अकाउंट रिसीवेबल हैं तो उसको रिड्यूस करेगा, विच वाज पुट बैक इन इन्वेंट्री ₹400। हमने उसको जो सेल जो उसने हमें मर्चेंडाइज रिटर्न किए हैं, यानी जो हमारी सेल्स रिटर्न है उसकी वैल्यू 400 है, इनवाइस एज पर इनवाइस, बट एक्चुअली कास्ट इज ₹240। Required care prepare entries in journal form to record the transactions assuming use of the perpetual inventory system। perpetual inventory system को हम कीप इन माइंड में रखते हुए जो इसकी जनरल एंट्रीज है उसको हम जनरल में पास करेंगे। तो मैंने ये सोल्यूशन बनाया है एक्सेल में, तो आप कैंडिस को देखिएगा। 7 अक्टूबर को हमने क्या किया, जानो को सेल किया ऑन क्रेडिट पे, दिस बिकॉज ऑफ दिस इट इज अकाउंट रिसीवेबल account, so it is debit on debit side to sales account it is always credit 6,000 on credit। अब हमने सेल्स किया तो हमें पैरेंथेसिस में इसकी वैल्यू दी थी कॉस्ट ऑफ गुड्स के कंटेक्स्ट में, तो विच इज इक्वल टू 3,600। so cost of goods sold is debited with the amount 3,600 and merchandise inventory is reduced by the uh, cost of the goods which is equal to 3,600। settled inventory account against sales मैंने लिखा। अब अक्टूबर को हमने क्या किया था, हमने रफ कंपनी से ऑन क्रेडिट परचेज किया था N30 FOB शिपिंग पॉइंट के साथ। तो हमने क्या लिखा है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्रीज, परचेजेस की बजाय हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिख रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट इन्वेंट्री में हम परचेजेस लिखते हैं। तो ये उसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विशेबल बनाने के लिए हमने थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी को डिफ्रेंशिएट किया है ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अकाउंट दैट वी हैव परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रफ कंपनी पेएबल अकाउंट 12,000 purchase merchandise on credit and 30 FOB shipping। You can write here and FOB as well in narration। Narration is used to refer the nature of the transactions, because here just mention the account, but in narration you just briefly mention the nature of the transaction for your understanding in future। Peter Watts receivable account, again we have made sales on credit to Peter Watts receivable account, which has a value rupees 4,800 to sales account which is equal to 4,800, and its cost of goods was given as well in parentheses which is equal to 2,880। cost of goods sold is debit by the 2,880 and merchandise inventory 2,880, and it is placed on the credit side because the merchandise inventory has been reduced by this value। Now on 10th of October, merchandise inventory, we again purchased merchandise inventory from Sewall Company on credit of this amount। Remember that this transaction is very interesting transaction, little bit tricky। He has mentioned that this amount already include 1,200 which has paid by the Sewall Company on the account of freight। I perceive that we have a commitment that you pay this amount as a freight on the FOB and later include this in invoice bill, so I am going to treat it as in this way। Now again 14th October, Peter Watts receivable account to sales account, again we are going to sell merchandise to Peter Watts on credit, so the same amount, and you must mention it here, I forget cost of goods sold, you must pass the same entry here as well, here below this। Now on 14th October, Ruff Company payable account is to merchandise inventory. This is related to purchase return by Ruff Company। One thing you have noticed that I didn't use any purchase return account because it directly reduces merchandise inventory or account payable account of
Ruff Company. So no need to be mentioned here purchase return account in the additional form. Now 17th October, we receive a check from Lina Company to whom we have sold merchandise on 7th October 2020 on credit, which has equal to 6,000. So we are going to make sales on cash on 19th October, cash account to sales account, cost of goods sold account to merchandise inventory. uh, the value of the cost of goods sold is 2160, which has been sold with the value of 3600. Now come to the transaction next happened on the 20th October 2023. Sewall Company payable account. We again going to make payment to Sewall Company to cash and bank account the same account. We already include 1200, which is initially paid by the Sewall Company as a freight charges. So remember this transaction and tricky element of in this transaction. Make payment to Sewall Company on gas purchase done on 10th of October 2022. Now we come to the transaction which has carried out on 21st October 22. We are going to make payment to Ruff Company, Company, and its payment account is reduced by the 10,800 because we have made a return of 1200 to Ruff Company on the purchase related to the 10th of October. So 10,800, 10,800. And on 24th October 22, which is the last day of the month, we have received a sales return from Peter Watts. So we have introduced a sales return account here because this is the reason why we are not introduced in purchase return, because it directly reduces the inventory account. But it first it didn't reduce the inventory count. So I am going to here we want to increase the merchandise inventory count. That's why here account receivable decreases by 400 and sales return account is decreases by 400. But we are going to reduce the merchandise inventory by the cost of goods sold by the cost of the inventory, and the another account cost of the goods sold by the same amount. So this is the reason that we are not going to uh, do the practice as we done in the case of return purchase return. So settled merchandise and cost of goods sold account against sales return. In other words, you can write here sales account because as per norms we cannot credit sales sales account because it is of credit nature. That's why this is another reason that we are going to introduce a sales return account. In purchase return, as such, there is no condition that we can debit and credit purchase account as per the nature of the transactions and conditions prevailing at that time. So I hope you have enjoyed this solution and you have completely understand this solution. If you have any query and suggestion, please come up with your suggestion in and drop in comment section. If you found any mistake regarding calculation or placing, please correct me in comment sections. If you want to add something else from your side to improve the solution of this question, all comments are welcome by not only by me and by also by the viewers and students other than me. Thanks for watching. Assalamu alaikum.